Le conseil, c'est tout simplement agis, puis fais confiance. Fais ton possible, puis repose-toi sur Allah. C'est la sunna d'Ibrahim alayhi salam. Et voici peut-être la vérité la plus difficile à entendre et pourtant la plus libératrice. Nous ne sommes que des voyageurs dans ce monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, en le prenant par les épaules, sois de ce monde comme un étranger ou un passant. Rapporté par Al-Bukhari. Et regardons comment nous traitons nos vacances. Il suffit de voir notre comportement lors des vacances. Nous prenons soin de nos valises. Nous savons que nous rentrons, nous ne nous installons pas définitivement dans la chambre d'hôtel. Alors pourquoi traitons-nous ce monde comme notre résidence permanente? Comment avons-nous oublié qu'un jour, nous aussi nous allons nous retrouver dans notre tombe? Et l'imam An-Nawawi rahimahullah nous rappelle dans ses commentaires des hadiths que cette conscience du passage est la source de toutes les vertus. Celui qui sait qu'il est de passage ne s'attache pas aux illusions du monde. Il ne laisse pas la richesse corrompre son cœur, ni la pauvreté désespérer son âme. Il vit dans ce monde avec les deux pieds sur terre et le cœur tourné vers le ciel. Et regardez autour de vous les personnes qui vous ont précédés. Vos grands-parents, vos ancêtres, ceux qui priaient sur ces mêmes terres, qui faisaient l'Aïd avant vous, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont partis. Et nous partirons aussi. La question n'est pas de savoir si nous partirons, mais dans quel état. Et cette conscience n'est pas morbide, elle est vivifiante. Car celui qui sait que sa vie est un voyage, avec une destination précise, il vit différemment au quotidien. C'est pour ça qu'il est important chaque matin de se réveiller avec cette conscience. Car cela change le comportement de la journée. La conscience qu'on a, cette pensée orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne gaspille pas son temps, il investit dans ce qui dure, la prière, le Coran, le bon caractère, la générosité, le service aux autres. Il sait que rien de ce qu'il fait pour Allah ne sera perdu. Et dans le Coran, quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Rien n'est perdu. Lorsque les personnes se posent la question, j'ai fait tellement de bien dans ma vie, que je ne sais si j'ai eu un retour à propos de mes actions. Mais il ne faut pas penser comme ça. C'est un signe d'égarement. Parce que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous le faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aime son serviteur avec un amour de 70 mains réunies. Jamais Allah ne vous a oublié et jamais il ne vous oubliera. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre présence. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. मुझे जानता कौन है? मुझे जानता कौन है? अगर मैं इस तरह का काम कर लूंगा या इस तरह की कोई हरकत कर लूंगा, कोई मुझसे कोई पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना। हर मुसलमान की एक मिशन होती है। जो भी दुनिया में आता है और मुसलमान होकर आता है, ये एक बड़ी नेमत है। हम तो मुसलमान मुफ्त में हुए ना, इसलिए कदर नहीं है। लेकिन जिन्होंने कुर्बानी की है दीन के लिए, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाए, जो कुर्बानी की है दीन के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, आज हमें मुफ्त में दीन मिला हुआ है, उसकी कदर नहीं है। और कदर तब आती है जब वक्त ख़त्म हो जाता है, जब पूरा हो जाता है, उस वक्त हमें ख्याल आता है अल्लाह जल्ल व अला ने कितने हमें सिग्नल भेजे हैं, और जितने भी इस हाल में फर्द हैं, हर किसी के लिए सिग्नल भी अलग है। और रब्बे करीम ने जब सिग्नल भेजे, हमें उस सिग्नल की पहचान भी थी। कोई हमारी फैमिली में दुनिया से पर्दा कर चुका, ये अल्लाह जल्ल व अला की तरफ accompagner d'une soura et ensuite faire les 3 takbir restants. Et de cette manière-là, on va compléter notre prière, Inch'Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبي محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. या इलाही अज़्ज़ व जल करीम बादशाह परवरदिगारा, हमारी आज की हाज़री नमाज़ ईद उल अज़हा कबूल फरमा या रब्बिल